That is what is the real meaning of salawat and durood. Preparation of elevating the status of someone. Inshallah tabaraka wa ta'ala, I will systematically explain to you what durood Shareef or salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam really is. That so many people, any problems they have, with durood padho. Right? Any problem, you go to a sick man, somebody is sick, how you console him? Make zikr and read durood, make salawat. Why is this thing always coming in between? Why? Inshallah ta'ala, मैं आप लोगों को समझाऊंगा. Allah give us tawfiq and hidayah inshallah. I will explain to you the excellence of salawat ala al-Habib sallallahu alayhi wasallam and why it is prescribed for every single thing that you do. Durood padho. Never be idle. The mashayikh, awliya, salihin, elders always said, never ever let your lips dry from not reading Durood Shareef. Always keep it wet, keep it moist by reading the zikr of Allah and the salawat of the Nabi sallallahu alayhi wasallam. And also I want to explain to you the difference that people make between the zikr of Allah and durood on the Nabi sallallahu alayhi wasallam. What is it and how can we understand it the true way as explained by the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा. परवरदिगार आलम हम सब गुनाहगार हैं, अपने फज़ल से हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा. इलाहुल आलमीन, जो मुसलमान हम में बीमार शिफा अता फरमा, जो हम में परेशानी उनकी परेशानियों को दूर फरमा. इलाहुल आलमीन, जो कर्ज में फंसे हुए उनको कर्ज से निजात अता फरमा. बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा. मुसलमान की रोज़ी में, आल में, औलाद में, मकान में, तिजारत में बरकत अता फरमा. जो इस दुनिया से चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।